Great. So let us start the session. By that time सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे कितनी देर में. ये विज कौन है? ये विज कौन है? Who is we? Which? Who is which? Please. Who is which? We से कौन है? टीना के Who is which? ఉండు బా Anyway, let us start the session. Let us do the prayer. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe. I love you, God. I love you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for blessings all the doctors of all the hospitals, all the staff members of the hospitals. Bless all the patients for their well-being. Thank you, thank you, thank you. We sprinkle golden magic dust on all the hospitals for all the patients for their well-being. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for our wonderful parents, for the best education they have given us, for the being what I am today. Thank you, thank you, thank you. I love you, Dad. I love you, Mom. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe, for giving me wonderful siblings. They love me, they protect me, they support me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for wonderful house that you have given me, the comfortable life I am having, the kind of lifestyle I have. Thank you so much for everything. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for all the teachers, gurus, mentors. They are showing me the right path and the right track. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for my perfect health. My cells are healthy. My systems are functioning so well. My organs are healthy. I'm perfectly fit, fine, active, and strong. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for this wonderful class. The miracle results I'm having in my life. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, universe, for all the failures that I have, all the obstacles that I get, all the concerns that I have, because they are growing me day by day. They are teaching me lessons every day. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I love you, God. I am one with God and God is one with me. Thank you, thank you, thank you. Blessings be to all. Thank you, thank you, thank you. Great. So today is Manvi's birthday and a beautiful day, 13th August. Wow. आज विपिन सूरी का भी बर्थडे होता है. क्या बात कर रही हो? सीरियसली? सीरियसली. यार आई शुड विश हिम. मैंने भेज दिया, मैंने विशेस तो भेज दी. अरे यार मेरे को भी बता दो, मैं भेज देता हूं. भेज देता हूं. This is Vij. Who is Vij? My name is Vijay. Oh, your name is Vijay. So, but it is showing Vij. Welcome to the session. Can you introduce yourself, please? My name is Vijay. Okay. I stay at location. I didn't get you. Can you be louder, please?
My name is Vijay. Okay. I am from Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Oh, Visakhapatnam. Wow. That is a beautiful place. So how do you come to know of our sessions? Sujata has Oh, introduced सुजाता me to this. हंसती जा रही है, बोल रही नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की। Actually, she is my ये mentor ये actually. 100% बात है, हर हफ्ते एक कोई बंदा आता है और मैं पूछती कौन है, सुजाता का पता नहीं। Sujata Pal introduced me to this session. Wow, She is my welcome mentor. sir, welcome so much over here. Thank you so much for joining us. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। कितना अच्छा लगता है सुन के अपने देश के डिफरेंट स्टेट्स का नाम, थे विशाखापट्टनम, मेरे कान खड़े हो गए, अरे वाह। अरे पूरे इंडिया को लेकर आएंगे हम। हैं? पूरे इंडिया को लेकर आएंगे। यस, पूरे इंडिया को लेके आना है। मुझे पता तू रहेगी तो इंडिया आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Great. I hope you would like the session, and I'm sure you will like the session. You know, हम यहाँ पे बहुत अच्छी बातें करते हैं। Right, sir. Welcome to the session, sir. Thank you so much Thank for being here. Right. And a grateful heart is a magnet for miracles. Now it's time to share your experience. So Vijay sir is here. सब अपना अपना थोड़ा experience share करो. What did you get? और कुछ कंसर्न्स होंगे, बट कुछ जो रिजॉल्व हुए हैं, कैन वी शेयर सो दैट, क्योंकि जैसे हमने अनमोल का बर्थडे मनाया था, सबने अपनी अपनी एक शेयरिंग करी थी. सो नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू शेयर फॉर मानवी टुडे, एज वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. And Manvi, lots of blessings to you, infinite happiness, unlimited wealth you are going to get in this year only. Bless you. Manvi, knock knock. Manvi, you there? चलो कोई बात नहीं. Now start sharing. Who would like to share? Anmol, just start with it because you only started on that day. That everybody should share something or the other, so that then फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो आज का कुछ शेयर करूं या वैसे शेयर करूं, मतलब ओवर थ्रू दी जर्नी का शेयर करूं? शेयरिंग से शुरू कर. हाँ, शेयरिंग. ओके, तो पहले आज की बता देता हूँ, फिर जर्नी की बता दूंगा. तो आज भाई साहब एक मजेदार, आपकी ब्लेसिंग्स ने आज मुझे बड़ा जबरदस्त जगह से बचाया. मैं आपको बता दूं, मैंने क्या हुआ था, मैं अपने घर में ही पार्क कर रहा था, तो बाहर पेड़ है, ठीक है. अब मैं कुछ सोचता हुआ रहा था, पता नहीं कुछ पैसे बराबर थे पापा को देने थे, मैं कैलकुलेट करता दिमाग में आ रहा था, और मैंने गाड़ी फंसा दी, पेड़ में अड़ गई, ठीक है. और अड़ गए, और भाई साहब मैं आगे पीछे सब गियर करूं, वो नहीं निकलने को तैयार थी. गाड़ी रोड पे टेढ़ी खड़ी है, और मैंने कहा भाई साहब, अब मैं किसी को भी घर से बुलाया तो सबसे पहले तो डांट पड़नी है गंदी वाली, क्योंकि आगे से ऑब्वियसली छिल गई है, लग गई है ना. ठीक है, बहाने में नहीं बचेगा, क्योंकि सामने दिख रही है. ये भी नहीं बोल सकते कोई मार के चला गया होगा पापा, पता नहीं, ये भी नहीं कह सकते. ठीक है, तो मैं अंदर आ गया. सबसे पहले तो जेब में जो कैश वैश था पापा को देना था, मैंने वो दिया, किसी को बोला कुछ नहीं. गाड़ी टेढ़ी खड़ी सड़क में, फटाफट एक निपटा के फिर मैं दोबारा बाहर गया. अब मैंने सोचा अब क्या करूं. टेंशन 2 मिनट बाद याद आया, मैजिक डस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते दोस्त. ठीक है, मतलब 2 मिनट लगे अभी रियलाइजेशन होने में. फटाफट से गाड़ी में पहिए को से लेके मतलब गाड़ी के पूरे लेके, पेड़ जिसमें अड़ गई थी साइड में, है ना, उसको लेके मैं मैजिक डस्ट डाल रहा हूँ. और उसके बाद मैं आके गाड़ी में बैठा कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हुआ. फिर मैं बैठा 2 मिनट, आंख बंद करी, फिर मैजिक डस्ट डाली. मैं कर रहा था. सच बता रहा हूँ मोनिका, मुझे आज भी नहीं पता है, इस समय भी नहीं पता है कितना मेरे गाड़ी का पहिया घुमाया, क्या घुमाया. कुछ तो घुमाया, मुझे इतना पता है. ये एग्जैक्टली ये जो मैं कॉन्शियसली कर रहा था ना, उससे तो नहीं हो रहा था. सडनली एक एंगल ऐसा हुआ, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दैट, ठीक है, कि वो होता ना घुमा रहा था, तो एक एंगल ऐसा हुआ कि मैंने देखा, अरे ये निकल रही है. मैंने पूरी पीछे धीरे धीरे पीछे खींच दी और निकल गई. और फिर मैंने सही से लगा दी, और अभी किसी को घर में कान खबर नहीं है. दबे पाँव में पता चल गया. अब हम आपके पापा को बता देंगे. गुड. भाई साहब बड़ा कांड हो जाता. It actually works. Actually, that's what I want to tell you. मैं बता तो रही हूँ, उस दिन मेरे घर में सारे बीमार पड़े. My husband, my son, my daughter, then my sister-in-law. Everybody was on bed, you know. और मैं जब क्लास में आ रही थी तो सब लेटे हुए थे, एक के बाद one by one, because they had gone somewhere, you know,
वो डॉगी को लेके गए थे, मे बी कह रहे वहां पे इन्फेक्शन था, ये था, वो था, आई डोंट नो व्हाट दे सेड, ऑल दोस थिंग्स, एंड एवरीबडी वाज, सबके टेम्परेचर 100 से ऊपर थे। एंड देन आई केम ओवर हियर फॉर द सेशन से पहले मैं उनको मैजिक डस्ट करके आई थी, एंड देन दे गेव वन तुलसी का पत्ता, कि ये पत्ता खा, नहीं हम काढ़ा पियेंगे, हमने पत्ता नहीं खाना, और सब जैसे सब लोग करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक पत्ता मेरे कहने पे खा लो आप लोग। तो तुलसी का पत्ता मैं दे आई थी, मैजिक डस्ट दे के आई, रात को खाना वाना सबको दे के, सबने खाया नहीं, किसी ने दूध पिया, किसी ने कॉर्नफ्लेक्स, जो भी आई डिड, एंड दे ऑल स्लेप्ट। मॉर्निंग देयर वाज नो फीवर, देयर वाज नो फीवर, और मेरे मतलब, और मुझे श्योरिटी थी कि दे आर परफेक्टली फाइन। आई जस्ट गिव मैजिक डस्ट टू देम, एंड मॉर्निंग में विजुअलाइज कर रही थी ऐसे हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे। सो जब मैं मॉर्निंग में उठी तो दे वर लाइक दैट, दे वर डूइंग देयर रूटीन, एंड मैंने कहा बुखार का हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है, एवरीबडी वाज परफेक्टली फाइन। सो इट डज वर्क, यू नो, इट इज वर्क्स मिराक्युलसली। तो ये कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इट रियली डज दैट वे। और मैजिक डस्ट तो हर चीज में, इनफैक्ट जितनी बार भी मैंने खाना बनाया है, मतलब मैंने जितनी बार भी खाना बनाया है, व्हेन आई पुट मैजिक डस्ट ओवर देयर, विजुअलाइज सब बड़े खुश होके खा रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, एंड एवरी टाइम नॉन वेज छोड़ के वो वेज खाया जाता है। नॉन वेज तो वेज तो सामने घास फूस होता है, but when we do that, they eat veg only because it is so tasty that way. My son and my husband, they both are hardcore non-vegetarians, but they love that. They love ek baar chane banaya tha, ek baar rajma banaya tha, so they loved it, you know. So every time whenever you are making any dish, and any time when you're doing any work, you put little bit magic dust, see the miracles, you know, happening. It will awesome, it will be out. Yes, now you can start with others also. Sujata, what is your experience? My experience are going good. Actually, क्या हो रहा है आजकल, जो भी मैं ट्रेड्स लगाती हूँ, like all the positional trades and all the trades are going in my favor. Magically, intraday and positional. Yesterday I bought Pidilite, it was going opposite, but today it regained back to track. Wow, very nice. So all the stocks are going in my favor. It is like amazing. So whatever trades I'm giving in the group also, and my students are also making amazing profit nowadays. So I have got some testimonials also. Wonderful, very nice, very very nice. I really want people to make money and be independent. Abundance सबके लिए है, कोई कहीं से ले लो. Exactly. Yeah, so it is why. Where is Madhu? Madhu की कुछ खबर नहीं, कहाँ है मधु? Madhu is there? Madhu कल भी नहीं था. Madhu is there? No, Madhu is not there. No, Madhu is not there. It's not in the participant list. Okay. Sangeeta, would you like to share? She wanted to share, in fact. Yeah, hi everyone. Hi. So it's like things are going good. They are placing well. मतलब अच्छा कहते हैं ना, एक smooth गाड़ी चलने लग गई है. Very nice. So that is there. Yeah. Good. And I wasn't studying. I told you ना. Yeah. You said. I told you कि पढ़ाई नहीं हो रही थी, मन नहीं लग रहा था, तो वो भी हो गया. Today I studied 2 chapters. मैंने कहा नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ. And so today I studied. Tell you, because sometimes, you know, we know all the tools. Now how to implement it? The most important thing is, जैसे कि मेरा भी ऐसे ही था कि मेरे को अपने पोस्टर बनाने, कुछ एक नई स्ट्रैटेजी लगा रही हूँ कि मैं उस वेबिनार के साथ अलावा इसके साथ एक और चीज कर रही हूँ, तो मुझे 2 पोस्ट्स बनाने थे. So I thought I'll create those posts, you know, when early morning, when you're doing gratitudes and all, whatever work you want to do, कि आज ये पक्का मुझे करना ही करना है, and जो आप नहीं कर पा रहे हो उसकी affirmation बना लो. So I visualized both the posts are ready and they are so good, and they are doing amazingly. Accordingly मैंने उसका Google form भी बनाया, फिर वो भी बनाया. It is done, perfectly done, and today I'm posting it. And believe me, 2 बजे तक मेरे दोनों पोस्ट बन चुके थे और पूरे रेडी थे. You know, whenever you want something to be done on that day, and when you want to do studies, you know, so you are visualizing it. Just close your eyes,
put magic dust on your day and just say, today my 2 chapters are finished and I know each and every content of the chapter. I am understanding so well. In this duration, it will be done. जैसे हम to do list बनाते हैं ना, please do that. And उस list तो magically that will happen. आपका दिल चाहे चाहे ना चाहे, it will happen. Your emotions, your vibrations, it will make you do that work. Just make sure that you do that. Yeah. Right. Thank you so much for sharing. Yes, next. Who's there? Thank you. Kinnari? Yes, ma'am. Yes, please share your experience. In relation to experience, I would like to say things are आपने अपना use किया and like things have started falling into place for me. Days are going good. I would say like stress free and easy. I would say पहले ऐसा नहीं होता था, थोड़ा टेंशन होता था, काम का होता था, घर में सारा कुछ बच्चों के साथ ये वो, but things are going very smooth compared to previous days जब हमने सेशन recently start करा था उसके पहले पहले जैसे. Okay. उसके बाद से everything is very easy and things like that. Apart from that, मैंने ये जो अपना practices आगे करने का कैसा क्या प्लान सारा कुछ कर रही थी वो सारा कुछ हो गया. I've ordered a book for myself. I've ordered yellow pages क्योंकि वो नहीं थे यहाँ पे. तो वो सारा कुछ अभी it's in transit, so I'll be receiving it this week. So I'm getting everything organized for myself so I can be into this same ritual moving forwards. Very nice. Congrats. Yeah, thank you so much. रेड पेन का पैकेट मैंने तो पूरा पैकेट ही मंगा लिया. मेरा हर दूसरे दिन 2 पेन खत्म हो जाते, 3 पेन खत्म. तो I have already ordered the complete packet. So मतलब पूरा स्टेशनरी I'm fine. मोनिका, मुझे वो ऑनलाइन साइट जाननी है. हेलो. मुझे ऑनलाइन साइट जाननी है जहाँ से ऑर्डर करते हो यार. मैंने कोशिश करी थी, वो ऑनलाइन मिला ही नहीं मेरे को. तो मेरे बेटे ने तो जिस दिन किया उसे अगले दिन मॉर्निंग में आई गॉट. अरे यार वो आपने साइट पूछ दो बस. Who else would like to share, please? इतने सारे लोग हैं. ज्योति, would you like to share something? Yeah. Yes, Didi. I'll share. It's a very small sharing. I'm working from home, so I got very little time to cook and do home course. So मैं जल्दी से सुबह मॉर्निंग में ही कुक कर लेती हूँ. एक दिन मुझे लगा कि लग रहा है कुछ अच्छा सा नहीं बना मेरे से ना आज. तो मैंने कहा चलो बाद में ठीक ठाक कर लूंगी. आई स्टार्ट माई ऑफिस वर्क. तो बट देन माय सन केम एंड ही वाज फीलिंग हंग्री. तो मैंने कहा अच्छा तो बना नहीं है, पर मैंने मैजिक डस्ट डाल दिया उस पे. तो ही वाज सेइंग आज सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है. मैंने कहा अच्छा. I was so surprised. मैंने कहा सुबह तक तो अच्छी नहीं थी and now magically it has transformed into a very delicious one. जो होता है हमें क्या होता है, but it is there. I always very good. And one more thing, मेरे स्टाफ के साथ ना कुछ इश्यू चल रहे थे. मीन्स नॉट इन दिल्ली, इन उड़ीसा. तो स्टाफ काफी मतलब जैसे हम लोग चाह रहे थे वैसे काम नहीं कर रहे थे. तो डेली वो बोलते थे हम स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. तो वहां पे थोड़ा स्ट्राइक यूनियन का काफी है. तो मैं 2 दिन से काफी वो टू डू लिस्ट में भी लिख रही थी, थैंक यू लिख रही थी, दैट इश्यूज टू बी रिजॉल्व टुडे. तो आज वो इशू रिजॉल्व हो गया. नहीं तो कहाँ वो स्ट्राइक हो जानी थी और इतना बड़ा इशू बन जाता है वो. तो नाउ इट इज फाइन. Good. Just because of First, give gratitude to these people. Yes. They are hardworking and they're doing so उनकी हर फैमिली के लिए जितने भी लोग हैं, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, just sprinkle magic dust and just pray for them that they should get, healthy, wealthy and wise. So just pray for them. Give lots of gratitude. It is such a good fortune to give them the gratitude. Yes. Great. Thank you for sharing this. It's not a small sharing. It is such a big sharing. Thank you so much. Okay. Right. Thank you. Neeru Didi, you would like to share something? You were dealing with something and then you came out. Now today you are happy. Just share what is the experience and like.
I was sharing that without any cause you should be happy. if there you are finding out any cause, तब तो बड़े सारे causes उल्टे भी मिल जाएंगे. तो we are like magnet ना, तो अपने आप से ही वो promise कर लिया कि I will not be in a difficult mood, I mean angry mood या जो भी mood ही change कर लो. तो I maximum use that magic rock. वो मेरे हाथ में होता है. तो बस उसको लेके बस थैंक यू 3 बार बोल दो और उसके बाद अपने आप मूड मेरा इतना कामनेस में चला जाता है ना. बिलीव करना ये बहुत बड़ा ट्रूथ है और मुझे लगता है बस मेरे पास बहुत बड़ी पावर है जिसको मैं यूटिलाइज करूँ तो सब कुछ ठीक हो सकता है. बट फिर थोड़ी देर बाद सिचुएशन फिर दिमाग खराब कर देती है. तो somehow it is all about practice कंटिन्यूड रहेगी. थोड़ा सा अभी न्यू है, प्रैक्टिस होती रहेगी तो definitely will win everywhere. And good. That is the how to come back and restart the things again and again. Great. Anybody else would like to share? Vikram. हेलो. हाँ जी, गुड इवनिंग जी. गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? आपको पकड़ लिया? नहीं, मैं मैसेज देख रहा था. मैं मैसेज देखा तभी मैं लेट आया. मैं अभी मैसेज देखा तभी मैं एंटर हुआ. आई एम सॉरी, आई एंटर लेट. अभी देख के Not a problem. Just share your experience. अच्छा, बिफोर आई से समथिंग, जस्ट वांटेड टू नो, आप जो नया सेशन शुरू कर रहे हैं कब कर रहे हैं? 17th Monday. 17th of August. Yes. somebody from Landmark asked, तो वो आना चाह रहे हैं. अच्छा. तो कैसे कनेक्ट करेंगे वो आपसे? आप उनको नंबर मैं उनको आपका नंबर दे दूं? हाँ, नंबर दे दो. ठीक है, because they know. फॉर्म भेज दो, let them register and then they come. नंबर दे दो. ओके, ठीक. नंबर will do ना. और मैं वो गूगल फॉर्म भी उनको भेज देता हूँ मैं. Yes, गूगल फॉर्म भेज दो. Got it. So thank you. And regarding I'm sharing के लिए जहाँ तक जो इन पूरी इस जर्नी का एक्सपीरियंस रहा 28 डेज का, उसमें ये बहुत कुछ छोटे स्टेपिंग स्टोन्स लिए हैं. जैसे कि I have made a small card which it's on the yellow paper, yellow sheet probably, and उसके ऊपर मैंने ना अपना एक boxes बनाए हैं. I have made 12 boxes. And these 12 boxes are related to every section what is required. मतलब मुझे जिस फील्ड में क्या चीजों को अपनी जरूरत है. जैसे अगर हेल्थ का रिलेशन है तो हेल्थ का एक बॉक्स बनाया है, मनी का एक बॉक्स बनाया है, करियर का एक बॉक्स बनाया है, अपनी कंपनी के लिए एक बॉक्स बनाया है. तो उन बॉक्सेस में मैं अपनी छोटी मैजिकल आउटकम्स लिख रहा हूँ और साथ में उसी के साथ में डिजायर्स लिखता जा रहा हूँ. Okay. So this is I have done. Nice. Very nice. And along with that, मैम, मैंने उसके लास्ट पेज पे थैंक यू लिखा है. एंड इस जर्नी में मैम मैं अभी तक जिन भी लोगों से मिला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. पेज तो वैसे बहुत छोटा है, सो मतलब क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मिल चुका हूँ इस तकरीबन मतलब जर्नी में, अपनी इस जर्नी में, मैजिकल की नहीं मैम, अपनी लाइफ की जर्नी में. सो आई एम जितने लोग मुझे याद हैं अपनी लाइफ में अभी तक, मतलब जिनसे भी मैं मिला हूँ, जिनके साथ मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, जिनका मैंने बहुत बुरा किया है विलिंगली और अनविलिंगली, मैं उन सबको अपनी उस डायरी के लास्ट पेज पे जहां मैंने थैंक यू लिखा है, उस पूरे पेज के ऊपर उनका नाम लिख रहा हूँ, उनको थैंक यू कर रहा हूँ. दैट्स इट. वेरी नाइस. एंड यू कैन सी योर कॉन्टैक्ट लिस्ट एज वेल ऑन योर फोन, जस्ट या थैंक यू. मैं अभी एक्चुअली यहाँ से पीछे जा रहा हूँ, मतलब राइट, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस जर्नी फ्रॉम राइट टुडे. अभी मैजिकल का ग्रुप है, फिर धीरे मेरी लाइफ का ग्रुप है, फिर धीरे मेरे ऑफिस का ग्रुप है. सो आई एम टचिंग ईच एंड एवरीवन. और मैं ये स्कूल से लेके मैम पीछे तक जा रहा हूँ वापस, अपनी सारी जॉब की जर्नी से लेके धीरे पीछे जाता जा रहा हूँ. Wonderful. Very nice. That is the best way to show gratitude, then you get a cause to create, that way. You're taking it as a challenge. Yeah. Very good. Very nice. Thank you, ma'am. Good. Thank you. In fact, I would. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. So again, I would say,
let's keep our vibration on the higher note. और मैं आज पहले ही बता दूं, exact 7 o'clock I'm going to close it because आज मेरे भाई का भी बर्थडे है and the party, एक सरप्राइज पार्टी मैंने अपने घर में ही रखवाई है, तो so I have to close by 7. मुझे कुछ तैयारियां करनी है, बाकी सब ये लोग कर रहे हैं, so that is why I want to go little early. And so this screen says you have to be on the higher vibration. When you are at the higher vibration, so you attract many more things. And the highest vibration किसकी होती है? Love की होती है. When you love someone, तो आप देखो कि आप कितने खुश होते हो, मतलब you are on top of the world, जिसमें आप कुछ भी manifest कर सकते हो उस peak vibration पे. Then the second level is your gratitude. उससे कम होता है joy, उससे कम होता है passion, उससे कम होता है happiness, excitement, joy, hopeful satisfaction. Just be there. Don't come down. बोर्डन पे नहीं आना, annoyance पे नहीं आना, criticism पे नहीं आना, blame पे नहीं आना, revenge पे नहीं आना, guilt पे नहीं आना, worry पे नहीं आना, fear पे नहीं आना. You just be on the higher level. You will see the things happening in your life, you know. So for this, thank you, Vimy. Okay. So, and when we are at the higher vibrational level, see the brain, you know. अगर आपके पास abundance है तो आप देखो कितनी ग्रीनरी, यानी कि हमारा जो हमारे ब्रेन का साइड है वो कितना ब्राइट और कलरफुल होता है. एंड व्हेन वी आर सैड इट इज ऑलवेज ग्रेइश एंड ब्लैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, so let's keep our brain that active all the time, happy all the time, in love and all the time in gratitude. So आप सिर्फ ये सोच के चलो, whatever universe is giving to you, वो चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे चैलेंज है या कुछ भी है, वो आ रहा है. जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के अंदर आप ट्रेन में रास्ते में आपके डेजर्ट भी आएंगे, रास्ते में आपके हिल्स भी आएंगे, रास्ते में फाउंटेन्स भी आएंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल कम. जस्ट एक्सेप्ट every situation and accept it and take action and go ahead to your journey. Never think, अगर आप किसी एक पहाड़ को देखने बैठ गए, पहाड़ में कुछ और हो गया, वहां देखने बैठ के, तो बाकी जर्नी भूल जाओगे आप, तो आपकी गाड़ी रुकी रहेगी. So it's better to accept each and everything, whether it is a bad moment or it is a good moment. Accept it with grace and move ahead. मुझे मालूम है हर चीज के अंदर कोई भी बैड मोमेंट आएगा, हमारे इमोशंस आएंगे, हम रोएंगे, हम परेशान होंगे. Just keep that emotion aside. Yes, it is there. It is a sad thing, but life moves on. So just usko side karke, then learning and just move on. This is the way you go with the life, Okay. Then, as I told you regarding the affirmations, ये वाला आप snapshot ले लेना जो affirmations है मनी की. But I would like to share one more thing, When you change, the way you look at things, the things you look at change. Albert Einstein once observed that the most fundamental and major decision that you have to make in your life is this: do I live in a friendly or a hostile universe? Which is it? Is it a universe that is filled with hostility and anger and people wanting to hate each other and people wanting to kill each other? Is that what you see? Because when you see the world that way, that's exactly what you will create for yourself in your life. This is from great scientific mind. And the interesting thing is that this is not just a clever play on words, that when you change the way you look at things, the things you look at change. I'd like you to imagine the following scene. You're in your house. You've got your car keys in your hand. The lights go out. Power failure. You can't see a thing. You stumble around in your living room and you drop your keys.
and you look around for a moment and you realize that you're never going to find them in the dark. But you look outside and you notice that the streetlights are on. So in your mind, a light bulb goes off. I'm not going to sit around here in the dark and grope around looking for my keys when there's a light on outside. I'm going to go out here under the streetlight. I'm going to look for my keys. Why are you laughing? This just makes a lot of sense. So you're out here and you're groping around and you're looking for your keys and you're looking, and your neighbor comes along and says, "What happened, Wade?" "Well, I dropped my keys." "Well, I'll help you look for them." And the two of us are now down here looking for our keys. And looking, finally he says to me, "Excuse me, but where did you drop your keys?" "Well, I dropped them in the house." He said, "You mean to tell me that you dropped your keys in the house and you're looking for them out here in the street? That doesn't make any sense." And I said, "Well, it doesn't make any sense to grope around in the dark when there's light out here." Now you laugh and you think how silly that is, but isn't that exactly what we do when we have a problem, a difficulty, a struggle that is located inside, and we're looking for the solution outside, someplace outside of ourselves? It would be like going to the doctor and telling him all of your symptoms. The doctor says, "Oh boy, you've got a lot of symptoms." And he starts writing out prescriptions. You need a prescription for this symptom, you need a prescription for that symptom. And finally, he gets this 4 or 5, and you go to walk out, and you say, "Well, I'd like my prescriptions." He says, No, I'll give this one to your mother-in-law, and I'll give this one to your neighbor, and I'll give this one to your daughter, and I'll give this one to your father. I mean, you're the one with the struggles and with the difficulties. Expecting somebody else to change or something outside of you to get better in order for you to make your life work is something you have to really take a hard look at. It's in here. This is a very difficult principle for many people to get, but one that I believe very strongly in. I was in a group one time of drug addicts and alcoholics, and the sign on the wall said, "There are no justified resentments in this group." What I said to that group that night was, no matter what anybody says to you, no matter what kind of anger comes directed towards you, no matter how much hate you may encounter showing up in your life, there are no justified resentments. Meaning that if you carry around resentment inside of you about anything or about anyone, and I'm talking about the person that you lent money to and hasn't paid you back, I'm talking about the person in your life that you feel was abusive in your life, I'm talking about the person who walked out on you and left you for somebody else, I'm talking about all of the things that you have justified in your heart and in your life that you have the right to be resentful about. And I'm suggesting to you that those resentments will always end up harming you and creating in you a sense of despair. No one ever dies from a snake bite. A snake bite will never kill you. You cannot be unbitten. Once you're bitten, you're bitten. But it's the venom that continues to pour through your system after the bite that will end up destroying you. There are many ways to get the things that we want for ourselves in our lives. But basically, it all begins with how we choose to think. As you think, so shall you be. 7 little words that I think are perhaps the most important things that we can learn and master in our lives. This whole proverb notion that I become what I think about all day long. And once you know that what you think about is what expands, you start getting real careful about what you think about. You don't allow your thoughts to be on anything that you don't want, or that you wouldn't want to have manifest or show up for you in your life. Have a mind that is open to everything and attached to nothing. One of the central principles of my life is that no one knows enough
to be a pessimist about anything. And that each and every one of us, when we close our mind to what is possible for us or what is possible for humanity, closes off the genius that resides and lives in each and every one of us. Having an open mind doesn't necessarily mean finding fault with all of the things that you've been taught by others. It means opening yourself up to the potentiality and the possibility that anything and everything is possible. So having a mind that is open to everything and attached to nothing really means finding within ourselves the ability to get rid of a trait that I find so common in the contemporary world. You know that most people that I meet spend their lives looking for occasions to be offended. They actually are out there hoping that they can find some reason to be offended. And there's no shortage of reasons. They're out there everywhere. The way this person dressed, or what this person said, they turn on their TV, they hear the news, they're offended by this. Someone used language that they didn't like, someone doesn't share the same customs that you, and people all day long. In fact, if you keep track tomorrow, you will find probably 100 reasons that you can go around being offended. But a mind that is open to everything and attached to nothing is a mind that says, I'm never looking for anything to be offended by. And that whatever anybody else out there has to say, my response to that is, that's an interesting point of view. I've never considered that before. Hello? Hello? To the music that we hear. But all of you have some music playing. And all of you have a heroic mission. There's no accidents in this universe. We all show up here with a purpose. There's an intelligence that is a part of everything and everyone, and all of us are connected to it. And too many of us are afraid to listen to that music and march to it. You out there, I know you have a book you wanted to write. I know there's a composition you wanted to compose. I know there's a song you want to sing someplace. Maybe you want to raise horses out in Montana. Or maybe you want to open up an ice cream shop on Cape Cod. Who knows what it may be. Maybe you just want to travel and see the world. Maybe you want to go into a relationship with someone, but you've been afraid to, but your heart says it's the right thing to do. All of us feel something. And in Leo Tolstoy's famous novel, The Death of Ivan Ilyich, he asks this question that would be terrifying to me. He says, as he has his accountant from Moscow lying on his deathbed, contemplating the horror of this question, what if my whole life has been wrong? I've known what my music is. It's playing right now. As I stand here in front of you with these cameras and in this place, as I sit down and write my books and tell the world what I know are my truths, I feel always completely on purpose and fulfilled. And no time will I ever come to the end of my life and say, what if my whole life is been? Whoever you are, whatever that music is, however distant it may sound, however strange, however weird others may interpret it to be, don't get to the end of your life and know that you're going to leave and not have it played yet. Don't die with your music still in you. मोनिका व्हाट अ वीडियो यार, मतलब दिल चीर के रख दिया यार। ये वीडियो मेरे को चाहिए, कुछ भी हो जाए। मतलब I'll share it in the group. I mean, this is so, मतलब I don't know, but this is the best. I'm honest, for me this was the best video ever, a perfect ending to the classes. I mean, I couldn't have asked for something better, trust me, genuinely. मतलब पता नहीं यार, मेरे दिल को इतना छू गया ना, मैं क्या बताऊं। Goosebumps when I saw this. हाँ मतलब है ना, हम मेरे को इतना छू गया, मुझे पता नहीं और को, बट
मुझे इतना पसंद आया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. I purposely kept it for today because I really Amazing. wanted everybody to see this is what we have been talking in all the sessions. Wow. This was like a accumulation of everything, you know. Yes, yes. And it was very nice, amazing. So I would like everybody, what did you learn from the video, first of all, and second thing, what are you taking it on? There is no point I spend at least 1 hour to get appropriate video for appropriate session. That takes time. ठीक है, 10 देखती हूँ, 10 देखती हूँ, 25 देखती हूँ, 50 देखती हूँ, कई बारी ज्यादा भी देख लेती हूँ, just to see that it is appropriate for the session. कई बारी एब्रप्ट भी ले लेती हूँ बिकॉज आई वांटेड, क्योंकि मुझे ये पता है मेरे ग्रुप में किसी के साथ ये चल रहा है और मुझे ये मालूम है जब किसी के साथ कुछ चल रहा होता है उससे कनेक्टेड मैं वीडियो देती हूँ. दिस वाज द एंडिंग, सो आई थॉट इट शुड सम अप एवरीथिंग, यू नो. So that is what I'm saying. I want everybody to take it on because what I can see is I'm spending so much of time to transform your life. You are sitting on the screen, मुझे नाम नजर आ रहे होते हैं और आप स्क्रीन पे नहीं हो और कहीं और कर रहे हो. What is the point? Please dedicate that at least 1 hour over here if you really want to transform yourself. उससे ऊपर कुछ नहीं है आपकी लाइफ में. आपने ये 1 घंटा डेडिकेट कर दिया ना, पूरी जिंदगी इसी पे डिपेंड करती है. That is what it's really sad to say. You know, you are here and then you are showing me your name is here, but you're not here. You're somewhere else. So please respect the sessions that we are taking, respect the kind of things we are doing. We are doing those things for you. मेरे लिए एक ये कमिटमेंट है और कमिटमेंट है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आप क्लास में नहीं बैठे हो एंड देन यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग बिकॉज आपने स्क्रीन तो ऑन कर दिया, मुझे मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना आप बैठे हो नहीं बैठे हो. मेरे लिए मत आओ सेशंस में, प्लीज डोंट शो ऑफ. You are here in the session for yourself. Give that commitment to yourself at least. Oh. So I would request everybody, you know, please be serious about it. So why we are here for a mission, ना? एक reason है हमारे यहाँ पे आने का. तो एक चीज वो बार बार आपकी जिंदगी में हो रही है और आप फिर भी नहीं समझ रहे हो, फिर वो फिर भी अगले सालों तक होती रहेगी. इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट टेकिंग द टूल्स, यू नो. बहुत सिंपल सा मैजिक डस्ट है, कितनी देर लगती है? हार्डली 1 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड, कितने सेकंड लगते हैं? Just do it. Why are you not applying in your life? Until unless you implement it, it is not going to change at all. वही ये बोल रहा था, चाबियां बाहर ढूंढ रहे हो, यहाँ है आपकी चाबी. So please, I request everyone to tell me at least one statement. What have you taken it on right from today, and what did you get from the video? Who's going to start? Yes, Monica ji, I'll start. Yes, please. Thank you so much. The conclusion, was very. Wayne Dyer is a very reputed person. You know, he was actually an alcoholic and he was an addict. Later, you know, he recovered from addiction by going to this Alcoholics Anonymous. You know, there is a very tough journey in his life. He's gone through a lot of toughness in his life to become what he is. And he's highly respected, you know, the books, what he has written and all. Yeah. I've seen many of his videos, but this point of, don't die until the music is still on, मैं कभी सुना ही नहीं. Very thankful to you, you know, it really relates to people like elders like me, you know, where we feel that life is still, a lot of time has been wasted in life without doing things which are not supposed to be, what is supposed to be done, you know. That's the main taking, and it's very touching to me that, you know, listening to him saying that don't die until still your music is not played. Thank you for the video. Right. Great. Thank you for sharing, sir. Thank you so much.
Anybody else would like to share? Just take it on, you know, it's for you. Just take it on. Sujata. Yes. What are you taking it on? Come on. It basically means ki, we are keep thinking about like outside, but it's more inside, which needs to be changed. Very good. So see, everybody has a list. सबके सोचने का तरीका, सबके देखने का तरीका, सबके सुनने का तरीका अलग होता है. So I really want everybody to share. Yes, come on, next. Vikram, what did you? मैं शेयर करता हूँ. Yes, मैं sir. शेयर करता हूँ. Please, sir. मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. जी सर. अभी मैंने किसी को कॉल लगाया था कल, तो जैसे ही कॉल लगाया तो कोरोना की बात हुई, तो वो सारा नेगेटिव बोल रहा था. मतलब कुछ नहीं हो सकता ये, तो मेरे को बड़ा इरिटेशन हो रहा था. मतलब आप मुझे जो नेगेटिव बोल रहे हैं तो उनकी बात सुनने में प्रॉब्लम है. मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ. जो लोग छूटते ही है ना नेगेटिव शुरू हो जाते हैं, तो उनको ठीक नहीं कर सकते, तो मैं उनको अब अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं रहूँ. जहाँ भी बहुत सी चीजें अटकी हुई हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ या तो सुलट जाए या फिर छोड़ते हैं उसको. ये एक बड़ा चेंजेस आया है. मतलब अभी भी हैं कुछ नेगेटिव चीजें, पर उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल गया है पूरी तरह से. तो छोटे छोटे कामों में तो मैजिक बहुत हो रहा है, पर अभी बड़े ब्रेकडाउन हैं, उसमें थोड़ा मतलब बेसेंस खत्म हो जाता है. सर बस सिर्फ इतना है, मैंने बार सबको एक ही कह रही हूँ, जब तक हमारी ये कंप्लेंट रहेगी ना, तो काम नहीं होंगे. You have, it is coming, just accept whatever situation is. You never know next moment क्या हो जाए. आप ये बोलना ही छोड़ दो, छोटे छोटे हो रहे, बड़े नहीं हो रहे. बड़े नहीं हो रहे, यूनिवर्स को सुनाई देगा नहीं हो रहे, तो नहीं होंगे. So let's, you know, welcome them with open hand, open heart. They are happening. It has happened, already happened. Delivery हो रही है, वो सब कुछ हो चुका है. So just have that faith in your mind and it will happen. Just have that faith. That is very very important. Believe का मतलब होता है पूरा believe करना. Undoubtedly, एक point भी अगर आपका, एक नींबू का कतरा भी अगर आपके दूध में चला जाता है तो दूध फट जाता है. So it is the same thing. Don't allow any negative thought to intervene into your manifestation. Just keep out of it. It is happened already there. Just coming and accept every day it is coming. It is there. ये सोच लो वो वही है, आपने क्या करना है उसका, बस ये सोच लो. राइट मैम, मेरे को एक शेयर करना है जी. हालांकि मैं लाइव ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन पता है वीडियोस आपका बहुत अच्छा रहता है, तो मैं देखना शुरू कर दी थी. तो मेरे को ये समझ आया कि हमें जो भी अपना रियलिटी बनानी है उसको पर्पस से जोड़ने के लिए डरना नहीं चाहिए. We have to keep it a correct purpose, जिससे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो पर्पस से जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही यूनिवर्स हमें देगा. एंड कुछ एक्सीडेंट के साथ तो नहीं होता है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ये सोच लिया बुरा, कुछ अगर बुरा भी हो जाता है तो उससे डरना नहीं चाहिए. जब पर्पस साफ है तो जब कुछ बुरा भी हो ही जाता है तो भी हमें वो धैर्य रहेगा कि आगे जाके अच्छा हो जाएगा. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम whatever happens is for a good reason. मेरे को लास्ट में यही समझ आया थोड़ा बहुत, और बाकी का I didn't understand. तुम्हें ज्यादा समझना है. हाँ, बहुत समझना है, और पूरा वीडियो देख के ज्यादा समझना है. मैम, मेरे को छोड़िए समझने की बात, छोड़िए, मुझे ये ना इम्प्लीमेंट करने में समझना है, ये बात है मेरे साथ. तो आप मैजिक डस्ट डालो, प्रेयर करो मॉर्निंग में कि I will do according to my plans. You will go according to your plans, but that you are not doing. If you apply, you have got all the tools with you. Magnificent outcome है आपके पास, magic dust है आपके पास, आपके साथ इतनी prayers है, gratitude है, आप करो ना, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा. जब आजकल वैसे थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? Why the planning is not happening? Whatever planning you are made, why it is not happening? Because you are not doing it. The gratitude has to be there. Gratitude एक या दो बंदे को देने से नहीं होता है. Gratitude has to be at least
10 करेक्ट, बिकॉज देयर इज अ प्लेटफॉर्म. जिंदगी में कोई भी चीज, अब वो यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, वो एक्सीडेंटल नहीं है. हाँ. You are creating it. Right. So Right. it is not happening in a planning way. So it is not created by you. You are not creating it. You are not making it happen. Right. So Right. it is created. See, आपके अंदर का ही outside दिख रहा है ना. So you have to create it yourself, plan it accordingly, and do it accordingly. आप अगर plan करके morning से चलोगे तो आप कर पाओगे जो आपने सोचा है. अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं है, अगर वेग है तो सब कुछ वेग आंसर आएगा ना. Right. So you have to plan it out. आपकी प्रेयर्स रेगुलर होनी चाहिए, आपका ग्रेटिट्यूड रेगुलर होना चाहिए, आपका ड्रीम रेगुलर होना चाहिए. So when these things are happening, automatically things will happen. मैजिकल टू डू लिस्ट बनाते हो, वो बनाओ ना. मैम और एक बात मैं आपसे शेयर करूं, आई डोंट नो कि ये सही है कि गलत है, बट लेकिन जिस दिन मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल्स A to Z पूरा फॉलो करती हूँ ना, उसी दिन मैं आपसे शाम में बात कर पाती हूँ. वरना आई डू नॉट गेट टू स्पीक टू यू और शेयर माय एक्सपीरियंस एट ऑल. ये मैंने बहुत बार देखा है पैटर्न. तो अब मैं क्या करूं, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरा ऐसा हालत हो रहा है कि मेरे को आपसे बात करने का मौका तब मिल रहा है जिस दिन मेरा पूरा मॉर्निंग का लिस्ट A to Z कवर अप हुआ हो. So that means तो बड़े दिन तक तो नहीं हो रहा, इसका मतलब है. हाँ, मतलब 4-5 दिन पहले से नहीं हो रहा था. yesterday and today were the most productive days मेरे लिए. So I would request you, Tejasvi, you need to train yourself, because if you are going to take the classes, I want you to take it very, very seriously. Yes, ma'am. ये definitely है. This is not acceptable. Reason is you have to take whatever we speak, because why I'm able to take these sessions are because I have been practicing from so many years. Right. I've done my Reiki, I've done pranic healing, I'm following so many gurus, and I'm practicing those things. So I'm able to talk, I'm able to express, I know all those things. But since I cannot tell you to take the classes without you are prepared, without your preparation, and I cannot see that preparation over there. I'm sorry to talk to Dr. JP. I'm telling in front of him only. Okay, that is not a big deal, because you know I'm writing everything day by day. I'm sorry, it is a big deal. It is a big deal. No. I'm saying that you telling in front of them is not a big deal. It is a deal that I'm not doing or I'm doing. Tejaswini Bache, when you are introduced in front of 40 people, 40 people की जिंदगी आपके हाथ में है. जी मैडम. Now I'm penning down every day. That is what I'm trying to tell you. Just keep your practice on. Yes. Just keep on studying. आज तो आपके पास किताब भी आ गई. You have time. Just prepare yourself and come to the session regularly. छोटी से छोटी बात भी डायरी में नोट करो. जी. वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. Right. आपको मतलब मैं भी इस अब मेरा 3rd सेशन स्टार्ट हो रहा है. अपने तीसरे सेशन के अंदर भी मेरे डायरी यहाँ पे होती है, क्या एग्जाम्पल्स देने हैं, कब क्या बोलना है, उसके हिसाब से पीपीटी बनाइए. आई प्रिपेयर माई सेल्फ. यू हैव टू प्रिपेयर दैट वे, बिकॉज इट्स नॉट कि हमने सिर्फ लेक्चर देना है. नो, यू आर कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म पीपल, राइट? When you are committed to transform people means you have to train yourself to that level. And I really want you to take it on. That is why I suggested your name. You are so sincere. You are so extraordinary. You are so good. You are spiritual also. You do meditation also. You are good. You are capable, but you are not focusing. That is the main. Sure. I'll not get into the scattered focus. Yes, that's it. Just keep your training on and it will be back. There is nothing wrong. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. सब कुछ कर सकते. The only thing that focus that is required, that is missing. So मैम एक और बात ये है ना मेरे साथ कि I get excited very easily. मतलब ये काम करने का जो excitement होता है ना, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए. This anxiety is so much in me. अगर कुछ भी चाहिए ना, नहीं, that is what. Put it into your prayers. You know, whatever. See, ये सबके साथ होता है. ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं. The only thing, if you want it to happen is, I'm sorry, you want it to happen is
you prepare the list and pray for it. It has happened by this time. वो आपका माइंड सेट हो जाए. जी मैम. आपको ये प्लान करना बहुत जरूरी है. ठीक है? श्योर जी. You are enthusiastic. You only took the initiative. मुझे बहुत अच्छा लगा. But मुझे confidence तब आएगा when you start seeing the classes regularly, coming to the class regularly, sessions आप देखो, examples देखो. कोई भी हवा में बात करके हमें कुछ भी किसी को नहीं कहना. Tried and tested things we need to talk to people. You know, ये जिंदगी का सवाल है. ये कोई एक लेक्चर नहीं है. हम किसी को कुछ भी देंगे नहीं. It is about the commitment. First of all, very very important. जो टाइम है उस टाइम पे जाओगे. And it is about the commitment of delivery. It is about the commitment of giving value to those people. Such a big project Dr. JP has given you. Such a beautiful opportunity. मेरे को तेलुगु आती होती ना तो सर को मेरे पीछे शुरू कर दिए होते. मैं भी पीछे आ जाता फिर. हाँ. मैं भी पीछे रहता. So I'm telling you, you know, मेरा ये ड्रीम, ये जो अब जाके मेरा ड्रीम सच हुआ है. This is being from last 5-6 years, which I've been looking forward. How can I transform people's life? और उसके लिए पता नहीं कितनी डायरियां मैंने लिख डाली, पता नहीं कितना कुछ करा, कितना ज्यादा वो है. एंड इस पूरे ग्रुप में आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन. मैं ये तो जरूर बताऊंगी. थैंक यू सो मच मोनिका जी. मोनिका मैम, मैं ना देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने में बहुत एंजाइटी हो गया है. एंजाइटी को अभी दबाया है मैंने एंड फोकस को एक स्ट्रीमलाइन कर रही हूँ. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कम अ वेरी ब्यूटीफुल आउटकम. थैंक यू. Thank you so much. Thank you for taking it on. I really acknowledge you for taking it on, and really that shows that how much committed you are, but you need to prove also. Yes, definitely. क्योंकि मैं डॉक्टर जेपी को मैंने प्रॉमिस किया है, but being my people, I will never want that you do it that way without any preparation. I will never accept that. Never. जी मैम, अभी इन सबके सामने मैं बोल रही हूँ. 16 members are there right now in this group. In front of everyone, I am telling that मैडम ने मेरे को सिखाया है कि हवा में बात करना क्या होता है और असली में काम करना क्या होता है. And it is not a easy cakewalk. It was a very hard thing for me. But yes, this is going to happen, and I am going to prove that मैडम ने एक सही बंदी को चूज किया है for Telugu classes. Thank you, ma'am. Thanks for taking it on. Thank you so much. Thank you. Thank you. आप देखो, हम लोग अपनी ही बातें करते थे. विजय सर तो पता नहीं कहाँ घूम गए. विजय सर, are you there? I think he left. He's left? Oh. Yeah, I think so. हाँ, दिख नहीं. मैम कल का लोड किया आपने मैम? हाँ जी. कल का लोड किया आपने? कल का लोड हुआ है? कल का वीडियो लोड हुआ है? लोड कर दिया था, रात को कर दिया था. हाँ, कल मैं मिस हो गया मैडम. जाता है वो तो चले गए. I think there's some internet problem at his side. Okay, not a problem. मोनिका, आज इंटरनेट की बहुत इश्यूज आ रहे हैं. भगवान की आज मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड शो किया था अपने लैपटॉप को, लाइट को, और इसको देखो कितने प्यार से चल रहा है मेरा. I know. अच्छा, I would like to share जो वीडियो था उसपे. हाँ, yes, please go on. Yeah, उसमें what I got कि you know, whatever my thoughts are, okay, that is what I will become. Yes, very true. So you need to be very. So I have to be really careful about my thoughts, what is going on in my mind, and you know, constantly being in gratitude and constantly checking the weeds which keeps on growing in my mind, you know. Yeah. So before ending the session, I'll just play a podcast which is very very beautiful. You will love it. I love podcasts. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. नहीं दे रहा? A lady had gone to the beach with her grandson. Yes, ma'am. Yes. They were enjoying playing with the sand. Please mute yourself. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. A lady had gone to the beach with her grandson. They were enjoying playing with the sand. She was watching him make these castles in the sand. Then suddenly a huge tidal wave came
and swept her grandson into the sea. She started crying, she started mourning, she started praying, "Oh God, please save my grandson. He is the only hope of my life. If anything happens to him, I will not be able to live." After a little while, another huge tidal wave came and threw him on the shore. She went to the grandson, hugged him, kissed him, and after a little pause, she looked up at the sky and said, "Hey, he had a cap on his head." Isn't that something that happens with us too? Most of the time that we should be grateful for things in life, instead of having that gratitude, we have complaints. And Guru Sahib says, "Ulahano main kahu na diyo, man meet tuharo kiyo." Ulahano means, it comes from the word ulamba dena, to always complain about something. He says, "Ulahano main kahu na diyo." I have stopped complaining in my life. Man meet tuharo kiyo. I consider each and everything that happens in my life as a blessing. Mitha lag raha hai. In Sukhmani Sahib, Guru Sahib says, "Das bastu le pache paave, ek bast karan bikhot gawave." We receive 10 kinds of blessings in our life, but then we start complaining about the one thing that is missing as compared to other people. 10 bastu, 10 kinds of things we get, but ek bast karan bikhot gawave, we lose our friendship or our trust or relationship with the one that has provided. The nature, everything that has been given to us, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ gratitude ਦੇ ਵਿੱਚ fill ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. We have complaints about the things which are missing. One little thing that is missing. Then he says, "Ek bhi na de, 10 bhi hirle, to muda ko kaha kare." And if he doesn't even give you that one thing, he takes away all the 10 blessings, including your life from you, then who do you go and complain to? And that is the realization, the day we have that, most of our complaints would finish. You must have heard this phrase from a song, old one, "Kuch log hain jooton ko rote, kuch logon ke paँव nahi hote." Wow. Mera haal itna kharab nahi. Some people cry because they don't have shoes, and there are people who don't even have feet to wear the shoes. And I realize, well, I'm not that bad. See, life is so simple. There are certain things you can do something about. You can change your situation in life. You can work on that. And there are certain situations you cannot really change. There are certain things which are out of your control. And one writer says, he says, if you have been complaining about something for the last 3 minutes, then I say 2 minutes ago, you should have started doing something about it. It means it is all right to maybe complain about something for 1 minute. But then after that, there should have been a realization whether it is something that I can do about or not. Complaining about it only takes us into self-pity and makes us feel that we are the victims. Whereas it is possible that we have to just realize that complaining is not taking me anywhere. In fact, the mantra that the Guru has given us is Vaheguru. And Vaheguru means always try to be in gratitude of whatever you have in life. It is amazing. The backache that you have signifies that you still have a back. If you only choose to complain about the pain, you're not being grateful that you still have a body.
And I tell you, the day we have this kind of attitude toward things in life, life would become so much better. Take, for instance, you have 24 hours to live in a day. How many hours are we spending on just complaining about things? And how many hours are we spending in gratitude? It's a question we have to ask ourselves. If you increase the portion of gratitude, the complaints become much lesser. Your perspective towards life becomes very positive, and there shall be a change, an inevitable change. The inevitable change will be Ulahno main kahu na diyo. I have stopped complaining completely. Man meet tuharu kiyo. Whatever has been there in life, I can see that as a blessing and say, life is amazing. It is beautiful. Koi ulamba nahi. Thank you very much for giving me this life to appreciate. Thank you very much for listening, ji. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. I'm very nice. Yes. It's so beautiful, Didi. So Very let's nice. stop complaining. Let's stop complaining. Take everything as a challenge. Take everything as a blessing. It is beautiful. It is beautiful. Thank you so much. I have to go now. Thank you. I'm very excited. Yes, about ma'am. my brother's birthday. And love you all. कल कोई क्लास नहीं है. परसों कल क्या है? 14 कल होगी. परसों नहीं होगी. Ma'am, wish him from our side. Yeah, sure. Your brother. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Didi. All the best. Bye. Thank you, ma'am. I'm Enjoy your sorry, time. थोड़ा सा Thank you. मैं इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली कनेक्टेड टू यू ऑल. जब मैं प्यार कर सकती हूँ ना तो थोड़ा सा डांट भी सकती हूँ. सो प्लीज टेक इट सीरियसली. आई रियली वांट दैट योर लाइफ शुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड. श्योर मैम. मोनिका हेलो, थोड़ा सा नहीं खूब सारा डांट सकती है. थैंक यू. Actually, डांट में अपनापन होता है. जहाँ अपनापन है ना वही डांट सकते हो, बाकी जगह नहीं डांट सकते. ये तो जहाँ हक होता है वही डांटा जाता है. थैंक Yes, यू. you have the right to scold. तो Yes. जाता वो विक्स को बोल दियो जरा. विज सॉरी विज. विजय नाम एब्रिविएशन लिखा हुआ था ना इसलिए तो इसलिए विज दिखाई दे रहा था. एनीवे मुझे भी नहीं पता था कि वो उन्हीं का नाम है. जब उन्होंने बोला तब पता चला. अच्छा. प्लेटफॉर्म में Thank you so much. Bye bye. You take care. Love you all. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye bye. Love you, Take care. ma'am. Bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Bye.